Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 4 of chapter number 3, Plant Kingdom. So, in previous lecture, we have learned about pteridophytes. Okay, and we have also completed our bryophytes portion and also completed pteridophytes. So, now in this video, we are going to study gymnosperms. Okay, so as we know, gymnosperm is a fourth group in the plant kingdom. Okay. So gymnosperm is upgraded version of pteridophytes. Okay, this is about natural. So the gymnosperm, gymnos meaning naked and sperma meaning seeds. So here the seeds are naked. Okay, हमने जो पहले के जो 3 ग्रुप देखे उसमें सीड नहीं बनते थे, बट इन जिम्नोस्पर्म देयर विल बी सीड्स एंड नेकेड सीड्स. नेकेड सीड्स मीनिंग there is no any outer layer or outer cover. Okay, so gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any other ovary wall and remain exposed. Exposed meaning वो बाहर की तरह दिखते हैं हमें. जिम्नो मीनिंग नेकेड, वो नेकेड होते हैं. सो बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीनिंग जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उसके पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके पहले भी वो नेकेड होंगे, उसके बाद भी नेकेड होंगे. सो दिस इज अबाउट जिम्नोस्पर्म. यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन. ओके, देन the seeds that develop post fertilization are not covered. Okay, so here gymnosperm meaning this is the difference between gymnosperm and angiosperm. So here we will discuss angiosperm in next video, but here in gymnosperm seed that develop post fertilization are not covered. Okay, तो जैसे ही seed fertilizes के बाद, okay, post fertilization meaning after fertilization, so the seed are naked. So gymnosperm include the medium size trees or tall trees and shrubs. So these all types of trees classified and included in this gymnosperm group. So you can see here in this picture. Okay, so gymnosperm. Okay, this is cycas. Okay, आपने cycas तो देखा ही होगा, normally gardens में दिखता है. And this is about pinus. Okay, this is B figure is pinus and this is ginkgo. So these are the our gymnosperm. You can see इनके जो seeds होते हैं वो you can see here seeds are naked. साइकस में भी यहाँ बीच में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड है, मतलब हमको डायरेक्टली हम देख सकते हैं सीड्स को, उसका आउटर कवरिंग नहीं होता है. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स डेट जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. मीनिंग द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज सिकोया एंड सिकोया इज इन जिम्नोस्पर्म. The roots are generally tap roots. Here the type of root is tap root. Okay, there are 2 types of root as we know. So roots in some genera have a fungal association in the form of mycorrhizae. Fungal association meaning as we know fungi is our another kingdom. So fungi associate with this root of this gymnosperm plant. Okay, for example in pinus. So pinus plus root of pinus plus this fungal association is called as mycorrhizae. Okay, so this question can be asked. While in some others, for example cycas, small specialized roots called as coralloid roots are associated with nitrogen. Okay, N2 meaning nitrogen fixing cyanobacteria. So cyanobacteria क्या है हमको मालूम ही है, Monera. Okay, as we know Monera kingdom, the member of Monera kingdom. So N2 fixing meaning the atmospheric nitrogen will be fixed by this bacteria, this cyanobacteria, and they provide this nitrogen to the cycas. So this is the association between plant and bacteria or plant and fungi. Okay, now the stems are unbranched, for example cycas, or branched is in pinus and cedrus. So these are the examples of types of stems. Okay, branched stems and unbranched stem. For example cycas में एक ही stem हमको देखने को मिलेगा, so it is unbranched. Now the leaves may be simple or compound. So here the type of leaves. Okay, as we know 2 तरह के leaves होते हैं, simple and compound. So the in gymnosperms there will be both types of leaves can be present. Now in cycas the pinnate leaves persist for a few years. Okay, for example in cycas, so the cycas the leaves are pinnate leaves and persist for a few years also. So few meaning more than 2 years. So this is about the leaves life cycle. Okay, this is in the case of cycas, and the leaves in the gymnosperm are well adapted
to the withstand with the extreme of temperature, humidity and wind. So here in gymnosperms, so the leaves of this gymnosperm species are well adapted, meaning adapted मैंने हर बार आपको बताया adaptation meaning टू हैबिट, उनको हैबिट हो जाती है. सो दे विथस्टैंड विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर, मीनिंग वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो भी वो सर्वाइव करेंगे, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होगी तो भी वो सर्वाइव करेंगे, एंड वाइंड ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट द एडेप्टेशन. ओके, सो जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स है वो वेल एडेप्टेड है. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. So this is about the adaptation. Okay, for example, in conifers is a plant in example in gymnosperm. So conifers के अंदर क्या होता है, needle-like leaves will be there. Needle-like meaning you can imagine needle-like leaf कैसे होते हैं, तो they will reduce the surface area. Okay, ये इनका एक adaptation है. So their thick cuticle and sunken stomata also help to the reduce water loss. So here this adaptation is due to the reducing the water loss. यहाँ पर ज़्यादा water loss ना हो, because more surface area will be there, so more water loss will be there. But here surface area is very reducing because of this needle like leaves. That's why here the reducing water loss is reduced. Okay, so here thick cuticle and sunken stomata. Stomata is as we know stomata, what is the role of stomata? So stomata meaning the way of the water and transferring of the gas. Okay, oxygen, carbon dioxide, that's why. So here sunken stomata and water loss will be reducing. Now the gymnosperm are heterosporous. Okay, so they produce the haploid microspore and megaspore also. Okay, heterosporous meaning both types of spore will be there, micro and mega. Okay, and haploid हो गए वो, because here the chromosome number will be ploidy 1n number, so that's why this is called as haploid. Now the two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on the sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form the legs or compact strobili or cones. So here in the case of this gymnosperm, so here not true flower will be there, but here cone is structure like flower like structure will be there. So here the two kinds of spore are produced. Okay, microspore, megaspore, and within the sporangia, and sporangia that is born on the sporophyll. Sporophyll is a spore containing bag like structure. So here sporophyll which are arranged spirally आपने अगर देखा होगा पिक्चर्स में स्पायरली अरेंज होती है जो स्पोरोफिल जो होती है, स्पोरोफिल के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे. Okay, so along an axis to the form a legs and compact strobili or cones. So this is the structure particular in gymnosperms. The strobili bearing the microsporophylls and microsporangia are called as microsporangiate or male strobili. So here the micro meaning male. Okay, micro meaning male. So here microsporophylls meaning they consist of microsporangiate. Okay, microsporophylls plus microsporangia is equal to microsporangiate. Okay, or we can say the male strobili. So here you have to remember this micro meaning male, and mega here here mega is related to female spore. Okay, so here male and female spore. Now the microspores develop into the male gametophytic generation, which is highly reduced and confined to the only a limited number of cells. So here as we know the plant life cycle. Okay, plant की जो life cycle होती है gametophyte and sporophyte. So here the microspore जो होगा वो डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, एंड विच इज़ हाईली रिड्यूस, वो बहुत ही कम समय के लिए रहती है, हाईली रिड्यूस होती है, एंड इज़ कन्फाइंड टू द ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. तो उसकी जो सेल्स के नंबर है वो भी लिमिटेड होंगे. दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. ओके, दिस इज अबाउट पोलन ग्रेन मीनिंग द मेल गैमेटोफाइट. ओके, सो हियर दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन ये मेल है. ओके, सो पोलन ग्रेन ही आगे ओवरी के अंदर जाएगी और फर्टिलाइजेशन होगा. सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विथ इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया? सो पोलन का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा. द कोन्स बियरिंग द मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबेली. सो हियर this is another difference
Okay, so female is related to macro. Okay, mega, macro are the two similar words. So the cones bearing megasporophylls with ovules, ovule is a part of female. Okay, so or the megasporangia are called as macrosporangiate, or we can say female strobili here. Okay, so keep in mind this both difference male and female. Okay, microsporangiate in the male strobili, and here macrosporangiate is female strobili. So this is the difference. Now the male or female cones or strobili may be born on the same tree, pinus. So here is the example of pinus. In the pinus, the male and female cones are on the same plant, same tree. Okay, so here male and female are on the same plant. However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on the different trees. So this is the difference between cycas and pinus. cycas के अंदर क्या होगा, मेल एंड जो फीमेल होंगे वो अलग अलग ट्री पे होंगे. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus. Oh, sorry, nucellus. So here the megaspore mother cell is the larger cell here from the female, and this is mother cell is parent cell, we can say. So is mother cell further will be differentiate into the one of the cells of nucellus. So this is nucellus is the further and production of the cells, final product, we can say. So here megaspore mother cell is a parent cell and is differentiated into the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. So here finally the nucellus will protected by the envelopes. So envelope meaning outer layer, we can say outer layer. So it is a protection to the nucellus, and the composite structure meaning the whole structure is made. This is called as ovule. Now the ovules are born on the megasporophylls, which may be clustered to form the female cones. So here the mega meaning related to female. Okay, so here megasporophyll which be clustered meaning to be group, वो सब इकट्ठे होंगे, सभी megasporophyll will be combined and form the female cones. Cone meaning here to flower like structure, not true flowers here, because flowers are in present in also in only angiosperms. So here जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, फ्लावर नहीं होगा लेकिन कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा. ओके, सो वो फ्लावर का ही एक रूप है. द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर. सो हियर क्या, यहाँ पर क्या होगा, अभी सेल डिवीजन विल बी देयर एंड हियर मियोसिस विल बी देयर. ओके, मियोसिस मीनिंग रिडक्शनल डिवीजन, वी कैन से. सो यहाँ पर एक सेल जो होगा उसके 4 सेल्स बनेंगे. यहाँ पर प्लोइडी होगी, वो प्लोइडी भी विल बी हाफ. ओके, यहाँ 2n के 1n बनेंगे. सो हियर द मेगास्पोर मदर सेल जो पेरेंट सेल था वो अभी डिवाइड होगा, मियोटिकली डिवाइड होगा. इट मीनिंग वो 4 मेगास्पोर फाइनली प्रोड्यूस करेगा. सो हियर 4 मेगास्पोर विल बी देयर एंड फाइनल प्रोडक्ट इज 4 मेगास्पोर्स. So one of the megaspores enclose within the megasporangium and develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. So here फाइनली क्या होगा, अभी जो मेगास्पोर्स है वो एनक्लोज विथ इन द मेगास्पोरेंजियम एंड फाइनली विल डेवलप इनटू द मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट. अब हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है कि वो फीमेल गैमेटोफाइट बने. ओके, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो फीमेल का ही पार्ट है. सो इट विल अल्टीमेटली डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट एंड दैट बियर्स 2 or more archegonia. Archegonia is a part of female reproduction system, or we can say the female sex organs. Now the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. Okay, this multicellular female gametophyte which is developed earlier, okay, so is also retained within this megasporangium structure. Now unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. मतलब कि जैसा कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में था वैसा यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा in the gymnosperm. So gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. वो किसी ना किसी पे डिपेंड होंगे. ओके, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. They remain within the sporangia and retain on the sporophyte. Okay, so they remain within the sporangia meaning वो sporangia में ही रहेंगे and on the sporophyte, वो sporophyte पे डिपेंड होंगे. यहाँ पर जो gametophyte है वो डिपेंड किस पे होगा, sporophyte पे, बिकॉज जैसे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में था वैसा यहाँ पर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट थे.
Okay, so the pollen grain is released from the microsporangium. Okay, now we are talking about this pollen grain, and this is a part of male. So now this pollen grain is released from the microsporangium, micro meaning male. Okay, now they are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules born on the megasporophyll. Okay, because here contact is necessary, contact between male and female. So they are carried in air current, air current में वो आएंगे, मीनिंग एयर में वो पास होंगे, एंड विथ कम कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स का ओपनिंग होगा, ओके, देन द मेगास्पोरोफिल्स के पास वो पहुंचेगी. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया in the ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia. Okay, so here contact is necessary, that's why this process is about to contact between male and female. So here the pollen tube will carry the male gametes. Okay, so pollen tube के पास क्या होगा, pollen grain होगी, male gametes होंगे. So they grow towards the archegonia in the ovules, ovules के पास पहुँचेगी and discharge their content. उसके पास कंटेंट क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वही उसका कंटेंट है. सो दे विल डिस्चार्ज, मतलब वहाँ पर वो डिस्चार्ज करेगी, उसको छोड़ेगी. नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया. ओके, मेल एंड फीमेल हियर आर कॉन्टेक्ट लाइक दिस. सो फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड. ओके, सो यही तो हर बार होता है, मेल एंड फीमेल का जो कॉन्टेक्ट होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट विल बी देयर. जाइगोट मीनिंग 2n. ओके, so 2n zygote will be there, and zygote will develop into the embryo, and the ovules will be developed finally into the seeds. हमको ये सब मालूम ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में होते हैं कन्वर्ट, बट इन द एंजियोस्पर्म, इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होते हैं वो फाइनली, जो फ्लावर की जो ओवरी होती है वो ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप होती है, एंड ओव्यूल जो होते हैं वो सीड. सो हियर इन द जिम्नोस्पर्म the zygote develop into the embryo and ovule into the seeds. Now these seeds are not covered because this is gymnosperm, so seeds are naked here. So in next video we are going to study about angiosperm. We will discuss about angiosperm, our last topic of this plant kingdom. Last topic not, but here last class of plant kingdom. Okay, so here we have completed our gymnosperm. So thank you and Jai Swaminarayan.